हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस के सबसे लंबे और पहले चैप्टर व्हिच इज योर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट, we see varieties of things around us, but we are unable to see things in a dark room. But on lighting up the room, things become visible to us. Why? This is due to light. Light is a form of energy that causes the sensation of vision. That means it enables us to see the things around us. Light travels in a straight line. Light हमेशा सीधी रास्ते से चलते हैं. The speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second. The path of propagation of light is called ray, and it is represented by a straight line with an arrow. Now beam. A beam of light is a bundle of light energy radiating from a source. Beams are of three types. They are parallel, convergent, and divergent. Parallel beam. Ray that travels closely along each other and never meet. And in case of convergent beam, ray that originates from a single source and spread outwards in different direction. And divergent, ray comes from different direction and meet at a single common point. Now, what is reflection? The reflection of light is the phenomenon of bouncing back of light ray on striking the surface of any object. It means bouncing back. Suppose this is a mirror, this is the reflecting surface. Ray of light comes and strikes the surface and it bounces back. आके टकरा के फिर चले जाना. Okay? That is called a reflection of light. You can see here is the reflecting surface. Ray of light comes and strikes the surface and it again bounces back. अभी हम सीखेंगे laws of reflection. Reflection के दो laws होते हैं which we are going to learn with the help of this ray diagram. Okay? This is the plane mirror and it is the reflecting surface. It is the reflecting surface. Okay? This is the incident ray. This is the reflected ray and the middle one is the normal ray. Incident ray comes and strikes the surface. Strike the reflecting surface. जो ray आके reflecting surface में टकराते हैं, that is called your incident ray. The incoming ray that strikes the surface. After striking the surface, it bounces back. The ray that bounces back, it's called your reflected ray. The ray that bounces off a surface after striking. Okay? And the ray between the incident ray and the normal reflected ray, there is a normal ray. This is the imaginary line. This line is the normal ray is the imaginary line which is drawn perpendicular to the surface at this point of incidence. This is the point of incidence. Okay? And the angle between, this is the incident ray, this is the normal ray. And the angle between the incident ray and the normal ray is called your angle of incidence. The angle between the reflected ray and the normal ray, this angle is called your angle of reflection. What does our first law say? The incident ray, the reflected ray, this is the reflected ray, and the normal all lies on the same plane. सारा ray एक ही plane में lie करते हैं. Second law, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. चलिए अब हम स्फेरिकल मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं. Now spherical mirror. What is spherical mirror? If the reflecting surface of the mirror is curved inwards or outwards, then the mirror is called spherical mirror. That means mirror के अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व हो या बाहर की तरफ कर्व हो, उसे हम spherical mirror कहते हैं. You can see mirror, spherical mirror of two types. Concave mirror, this is called your converging, and convex mirror, this is called your diverging. This is the concave mirror and this is the convex mirror. In concave mirror, you can see the reflecting surface is curved inwards. And in the case of convex, the reflecting surface is curved outwards. Concave mirror are used as a makeup mirror, paving mirror used by the dentist and in the car headlight. And convex mirror are used as a rear view mirror. They are used as a passenger sidecar mirrors.
अब हम मिरर के कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट डेफिनेशन के बारे में सीखेंगे। ओके, स्फेरिकल मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट definition or important points के बारे में सीखेंगे. This is a spherical mirror. This comes from a hollow sphere. Okay, and this is your pole. Pole is the central point of the reflecting surface. This is the pole. This mirror is a concave mirror, and this is the pole. And ये हो गया हम लोग का center of curvature. Center of curvature is the imaginary point of the hollow sphere. मीडिया का बीच का जो point होते हैं उसे हम center of curvature कहते हैं. Distance from pole to the center of curvature is called your radius. Okay, and this is called your principal axis. ये जो line है center of curvature pole के बीच में जो line हमने draw किया है वो हो गया principal axis. Okay, the point between pole and center of curvature is your principal focus, and the distance from pole to principal focus is your focal length. Same in the case of convex mirror, you see the outer part is the reflecting surface. This is the pole. This is the center of curvature. Distance from pole to center of curvature is called your radius, and this is the principal focus. Distance from pole to principal focus is your focal length, and this line is your principal axis. इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स होते हैं. अब हम उसी रूल्स के बारे में सीखेंगे. रूल नंबर 1. A ray parallel to the principal axis will pass through principal focus in the case of concave mirror, or appears to diverge from the principal focus in the case of convex mirror after reflection. ये एक concave है. This is the principal axis. A ray parallel to the principal axis. कोई भी ray principal axis से parallel जब होता है, when it strike the surface, it will pass through focus. Focus से pass हो जाएगा. In the case of convex, the ray which is parallel to the principal axis will appears to diverge from the focus. ऐसे appears होगा कि ऐसा लगेगा कि focus से pass हो रही है. Rule number 2. Rule number 2 is opposite of rule number 1. Rule number 1 का उल्टा. Rule number 2. A ray passing through the principal focus becomes parallel to the principal axis after reflection. In the case of concave. Okay. Or directed back towards convex, the principal focus reflects parallel to the principal axis. कोई भी ray अगर फोकस से पास होता है, in the case of concave, कोई भी ray अगर फोकस से पास होता है, that will become parallel to the principal axis. Same in the case of convex mirrors. The ray is appears to pass through the focus, it will become parallel to the principal axis. अगर light ray focus की तरफ जा रही है, टकराने के बाद पैरेलल हो जाएंगे. ये रे पैरेलल हो जाएंगे किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ. रूल नंबर 3. A ray passing through the center of curvature in the concave mirror or ray directed in the direction of center of curvature of a convex mirror is reflected back along the same path. कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, then it will reflect back along the same path. In the case of a convex, अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है तो वहीं से टकरा के रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे. नेक्स्ट रूल नंबर 4. रूल नंबर 4. A ray incident at the pole reflect back making the same angle following the laws of reflection. रूल नंबर 4 में laws of reflection अप्लाई किया गया है. We have already learned laws of reflection. What is laws of reflection we have learned? Okay, according to the second law, angular incidence is equal to the angle of reflection. Okay, you can see here this is a concave mirror. The ray of light which is incident on the pole. Okay, this ray of light will reflect back, and they will make the same angle, and both the angle will become equal. Then in the case of convex mirror, you can see the ray of light which is incident on the pole will reflect back and will make the same एंगल. अगर लाइट रे पोल पे इंसिडेंट हो रही है तो सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट बैक करती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है. Now let us learn few points about the image. Now, what is image? An optical representation of an object from when light rays coming from the object meet after reflection or refraction. Okay, it is an optical representation of an object. It is formed when light ray is coming from an object and it meet after reflection and or after refraction. Images are classified into two types, that is a real image and virtual image. दो types में classified किया गया है, एक real image, another one is a virtual image. The real image का form होता है, real image is formed by the actual intersection of light rays.
And virtual image is formed when light rays appears to diverge from a single point. Okay? इमेज फॉर्मेशन में कुछ कंफ्यूजन होते हैं कि कब इमेज रियल होते हैं, कब वर्चुअल, कब यूनिक, कब इन्वर्टेड. दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कनकेव मिरर है. इट्स अ कनकेव मिरर. ये कनकेव मिरर है. And this portion is the reflecting surface of the concave mirror. ये concave mirror का reflecting surface है. अगर if image is formed in front of the reflecting surface, then it is a real image. Reflecting surface के आगे में अगर image form होते हैं, then it is a real image. When image is formed behind the reflecting surface के पीछे अगर form होते हैं, then it is a virtual image. If image is formed upwards, ऊपर के डायरेक्शन में इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के अपर डायरेक्शन में इमेज अगर फॉर्म होता है, then it is erect. If it is in a downward direction, principal axis के नीचे downwards, then it is inverted. Remember this. Okay, again I'm repeating. Reflecting surface के आगे में अगर इमेज फॉर्म होता है, then it is a real image. Reflecting surface के पीछे में behind the reflecting surface, then it is a virtual image. प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में डायरेक्शन होते हैं, then it is a erect. प्रिंसिपल एक्सिस में नीचे में अगर डायरेक्शन होते हैं, then it is inverted image. Now we will discuss about the location, size and nature of the image. Image के size, location और position के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके नेचर के बारे में. Number 1. If the object is placed at infinity, infinity मतलब बहुत दूर infinity. अगर object infinity में place किया गया है, then what will happen? If object is placed at infinity, then light ray will come parallel. अगर object बहुत दूर होती है, then light rays parallel आती है. Remember these things. अगर object बहुत दूर में place किया जाता है, then light ray will come parallel. Okay? We have learned in rule number 1, when light ray is parallel to the principal axis and it passes through focus. कहाँ से पास होगा? It will pass through focus. So according to rule number 1, ray of light will meet at where? They will meet at F. तो उसका पोजीशन क्या होगा? इमेज का पोजीशन F. The position of the image is F. तो साइज क्या होगा? What is the size? Size is highly diminished and points is बहुत छोटा. Highly diminished size. Nature is real. It is a real and inverted. Nature real what? It is in front of the reflecting surface, so it is real. Next one. Position of the objects beyond C. Beyond C मतलब C का पीछे में. Okay? Beyond C. C के पीछे. Suppose हमने एक लाइट रे लिया. This is the object. This is the object. This is the object which is placed beyond C. यहाँ से एक लाइट रे निकला. Parallel हो गया. Light ray is parallel. Then it will pass through focus. दूसरा लाइट रे हमने लिया. सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गया. And if it passes through center of curvature, the ray will retrace back along its same path. Okay? अगर center of curvature से पास होने से क्या होता है? It will retrace back along the same path. इसके पाथ से retrace है. तो where the image will form? Image will form here. Where the image will form. तो image इसका डायरेक्शन क्या है? प्रिंसिपल इसके नीचे में डायरेक्शन है. तो the image is real and inverted. Inverted क्या? उल्टा. It is directed downwards, so it is inverted. Real to real. Reflecting surface का आगे है, that is real. Size क्या होगा? Diminish. Object से छोटा. Diminish in size. इसका position क्या होगा? F और C का बीच में image formation का है. समझ गया ना? Next. Position of the object is C. At center of curvature. Object का position कहाँ होगा? Center of curvature में. This is the object distance. This is the object. Plus at center of curvature. अभी ray of light, यहाँ से ray of light आया, टकराया रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस से, तो पास थ्रू फोकस. दूसरा लाइट रे यहाँ से निकला, फोकस से पास किया. ओके, व्हेन इट पास थ्रू फोकस हो गया पैरेलल. कहाँ से? इसके साथ प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल हो गया. तो इमेज फॉर्म दोनों में कहाँ पर सकता है? यहाँ पर टकराया. तो इमेज फॉर्म कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा इमेज फॉर्म. So what will inside of the image? Side of the image is same side as the side of the object. उसके इमेज का पोजीशन हमें कहाँ पर मिला? C पर. ओके, नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड. इन्वर्टेड उल्टा. प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. रियल
क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का आगे में है, दैट इज व्हाई इट इज रियल। नेक्स्ट, position of the object between C and F, between center of curvature and focus। अभी ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट का बीच में ऑब्जेक्ट पोजीशन है, ऑब्जेक्ट पोजीशन। अब यहाँ से एक रे निकला, ये रे फ्लैग किसके साथ पैरेलल है? ये फ्लैग पैरेलल किसके साथ है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, so it will pass through the focus। Next wave light, दूसरा लाइट फोकस से पास किया, it will reflect and it will come parallel to the principal axis। अभी दोनों वेव लाइट कहाँ पर मीट किया? यहाँ पर। ओके, पोजीशन इज बियॉन्ड सी, सी के पीछे में मीट किया। ओके, बियॉन्ड सी। इसका इमेज का साइज क्या होगा? ऑब्जेक्ट से बड़ा, एनालाइज इन साइज। नेचर इमेज क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एफ एफ, जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन फोकस पे होगा। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा? आगे ऑब्जेक्ट को फोकस में रखा। अभी रे ऑफ लाइट यहाँ से निकला, पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, पास थ्रू फोकस। दूसरा रे ऑफ लाइट पे यहाँ से हम निकला, फिर पोल पे रिफ्लेक्ट हुआ, टू मेक सेम एंगल, पोल पे स्ट्राइक किया, सेम एंगल बना के फिर रिफ्लेक्ट। अभी दोनों रे ऑफ लाइट क्या हो गया? दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे के साथ पैरेलल हो गया, तब कहाँ पर मिक्स होगा? दे विल मीट एट इंफिनिट। कहाँ पर मीट करेगा हमें नहीं पता, इंफिनिट। ओके, तो साइज ऑफ द इमेज होगी हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ा इमेज फॉर्म होगा। ओके, बिकॉज का नेचर क्या होगा? रियल और इन्वर्टेड। पोजीशन कहाँ पर है? हम लोग का इमेज का पोजीशन कहाँ पर फॉर्म होगा? इमेज का पोजीशन, वेयर पोजीशन ऑफ द इमेज विल फॉर्म, पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा? एट इंफिनिटी। ओके, इमेज का पोजीशन कहाँ पर फॉर्म होगा? ये वाला रॉन्ग है, नॉट एट infinity। Okay, it will form at infinity। Next one, position of the object between P and M, between pole and focus। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पर है? पोल और फोकस के बीच में है। फर्स्ट वाला पॉइंट हम देखिए, एक रे हमने लिया, पोल के साथ रिफ्लेक्ट हुआ, स्ट्राइक द पोल, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होकर सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो गया। नेक्स्ट रे हमने ऐसे लिया, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होके फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद इट रिट्रेस बैक अलोंग इट सेम पाथ में रिट्रेस होगा। ओके, इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा? इमेज पीछे में फॉर्म होगा, इमेज विल फॉर्म ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर। ओके, एंड इट विल फॉर्म एनलार्ज्ड इमेज। इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा? पीछे में, बिहाइंड द मिरर। ये एनलार्ज है, नेचर वर्चुअल होगा, नेचर इज वर्चुअल, नेचर इज वर्चुअल। डायरेक्ट क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज व्हाई इट इज डायरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल मींस बिकॉज इट इज बिहाइंड द मिरर। चलिए अब हम साइन कन्वेंशन के कुछ रूल्स के बारे में सीखते हैं। हमने यहाँ पर दो मिरर ली है, one is a concave mirror and other one is a convex mirror। The first one is a concave, this is a concave mirror, and this one is the convex mirror। We have taken two mirror, one is concave and other one is a convex। Okay, mirror का पोजीशन कहीं mirror कोई भी हो, doesn't matter, but आपको ये रूल्स याद रखना है, this is a very important rules। साइन कन्वेंशन में कार्टेशियन प्लेन का यूज किया गया है। This is the Cartesian plane, this is your x-axis and this line is your y-axis। Okay, the horizontal line is your x-axis and the vertical line is your y-axis। This is plus x, this is your minus x-axis, this minus x-axis, plus y minus y, and this point is the origin। Okay, this is the origin of the plane। जैसे कि ये प्लेन मिरर में ये pole हो गया हम लोग का origin, this is the origin of the Cartesian plane। For convex, this is the pole is the origin। Okay, ये हो गया हम लोग का focus, this is the focus, principal focus। Same in the case of convex mirror, this is also the principal focus। हमेशा आप याद रखिएगा
distance is always measured on the left hand side. Okay, from pole to the left hand side. पोल से लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग को डिस्टेंस का मेजर किया जाता है। okay? अगर डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड में मेजर किया जाता है then it is negative. Okay, if distance is taken from pole to the left hand side then it is negative. From pole to the right hand side then it is positive. Then in the case of convex mirrors, if the distance is taken from pole to the left hand side then it is negative, and is taken from pole to the right hand side then it is considered to be positive. Then in the case of height, this line is a principal axis. अगर height principal axis के ऊपर की तरफ होते हैं in the upward direction, then the height is positive. If it is directed in the downward direction, then it is negative. Convex mirror में भी same. Height अगर ऊपर की तरफ होते हैं then it is positive. अगर नीचे की तरफ होते हैं then it is negative. अब हम सीखेंगे U, V और F के बारे में. U, V और F का साइन कब कहाँ कैसे फ्लैग होता है when it is minus. U is called your offset distance. U is your offset distance. V is your image distance. And F is called your focal length. Okay? The distance which is measured from pole to the offset, that is called your offset distance. This is represented as U. Pole से offset का distance तक जो distance measure किया जाता है उसे U कहते हैं. It is represented as U. Same way, this is your U और V. V is the image distance. Pole से जहाँ पर image form हुआ उसका जो distance है that is called your image distance which is represented as V. और focal length कौन सा है? पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो लेंथ होता है उसे एफ से डिनोट किया जाता है. पोल और प्रिंसिपल फोकस के का बीच में जो डिस्टेंस होता है. यू हम लोग का कौन सा साइड में है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज यू इज नेगेटिव. ओके, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव? हाउ विल दिस बी? V is also in the left hand side, so V should be negative. But remember one thing, concave mirror हमेशा real and virtual image form करते हैं. It forms real and virtual image. If the image is real, then it is inverted obviously. If the image is virtual, then it will form erect image. Concave mirror form both real and virtual image. Okay? जब image real होता है, then concave, then V is negative. The image is real, then V is negative. Real image का form होता है, real image is formed in front of the reflecting surface. अगर ये हम लोग का reflecting surface है, it will form in front of the reflecting surface and V will be negative. V is positive when it is virtual image. When it is virtual. जब ये virtual image form करते हैं, virtual image कब form करते हैं? Reflecting surface के पीछे में यहाँ पर virtual image form करते हैं, reflecting surface के पीछे में virtual image. Okay? F. अब F positive है कि negative है? F is on the left hand side, so F will be negative. अभी convex mirror के बारे में बताते हैं. U हो गया हम लोग का negative, लेकिन ये left hand side में है. V, convex mirror always form virtual image. Virtual image it will be on the back side of the reflecting surface. Okay, if it is back side of the reflecting surface, then it will be positive. और focal length क्या हो गया हमारा? focal length, this is the focal length. Focal length is on the left side, so it is positive. अभी तो हम लोग ने सिर्फ U, V और F के बारे में बात किया है. H के हाइट के बारे में तो बात करने के लिए बाकी है. ना, what we talk about? HO is the height of the object. It's always in the height का object. What is the height of the object? Height of the object is always directed in the upward direction. आप ये ध्यान दीजिएगा, object का height ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ है. Okay? If a name is given to you, आपको ध्यान रखना है आपका object की height ऊपर की तरफ है. अगर it is ऊपर की तरफ है then it will be positive. अगर नीचे की तरफ है suppose, then it will be negative. Object. Height of the object is in the upward direction, so height of the object is positive. In the case of the convex mirror, height of the object will be a positive. The virtual height of the image में क्या होगा? तो concave mirror virtual और real image form करते हैं. Virtual होने तो obviously inverted होगा, sorry erect होगा, और real होने से inverted. Real, अगर ये real image form करते
then it is inverted. नीचे की तरफ होगा image. If it is inverted, then it is negative. Virtual होने से erect होगा. Erect होने से ऊपर की तरफ होगा. If it is erect, then it will be positive. Inverted होने से negative, erect होने से positive. Right? कन्वेक्स में क्या आता है? कन्वेक्स में तो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं. वर्चुअल इमेज फॉर्म होने से इमेज का हाइट क्या होगा? जिससे इरेक्ट होने से इट विल बी हाइट ऑफ द इमेज विल बी इट इज इरेक्ट. इरेक्ट होने से तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन में होगा. विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. इट विल बी पॉजिटिव. ये आपको अच्छे से सीखना है. ओके, समझना है. No need to memorize it. Don't memorize it. If you memorize it, you will forget easily. ये हो गया हमारा मिरर का formula. This is a very important formula to solve the mirror, convex mirror, concave mirror, numericals. ये हो गया हम लोग का mirror का formula. 1 by u plus 1 by v equals to 1 by f. Now magnification. What is magnification? Magnification is the ratio of the height of the image to the ratio of the height of the object. The magnification क्या है? Magnification is the ratio of the height of the image to the height of the object. Magnification is denoted by letter M. And height of the image is HI. And height of the image object is HO. Or you can write H2 by H1. Doesn't matter. और इसका एक और फॉर्मूला है M equal to minus V by U. Minus V is your object distance and U is your, V is your image distance, U is your object distance. Okay, you should remember these two formula. Next, ये कुछ रूल्स दिया गया है M के बारे में मैग्निफिकेशन के बारे में. अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होते हैं, when if magnification is negative, the image क्या होगा? The image that is formed will be real and inverted. Real image होगा और inverted होगा. इमेज के आगे में फॉर्म, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे में फॉर्म होगा और द इमेज विल बी इन्वर्टेड. इट मींस उल्टा. इफ m इज पॉजिटिव, अगर m पॉजिटिव होते हैं, द वैल्यू ऑफ m इज पॉजिटिव, then the image form is virtual and erect. Virtual image होगा, that will form on the back side of the reflecting surface and erect in the upper direction. Erect. If m is greater than 1, m अगर x से बड़ा है, 1 से greater है, then the size of the image will be magnified, बड़ा in size. If m is less than 1, m अगर 1 से छोटा है, then the size of the image will be diminished in size. ये हो गया हम लोग का magnification के बारे में. In this part, you have learned about reflection of light. In the next video, in the part 2, you will learn about refraction of light. So hope we will meet soon in the next video. Thank you everyone. Bye bye.